Hello class 9, welcome back to our channel. Class 9, we all are doing our chapter number 2, that is constitutional design, and our today's topic is making of the Indian Constitution. Before this we have already covered our two videos. Okay, so here we'll start the making of the Indian Constitution. So as we already discussed about the South African condition, the procedure, how they formed with lots of debate, discussion, and then they completed their constitution. Similarly, India's constitution 9th class was also drawn up under very difficult circumstances. It was not an easy task कि इतने बड़े nation का, and this nation is a diverse in nature. Yes, India is, आपको पता है that India में diversity exist करता है. So it was not an easy affair that time because people of India were emerging from the status of subject to that of citizens now. So country एक तो नया born हुआ after the partition on the basis of religious differences. This was the traumatic experience for the people of India and the Pakistan also. So all these were the conditions that time, and Indian Constitution के ऊपर एक बहुत बड़ा challenge था. Yes, and that time when the India and Pakistan separated, about 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. तो सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आई, पाकिस्तान में भी सेम प्रॉब्लम आई. बहुत सारे और प्रॉब्लम्स थे, लाइक प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. उन सबको डिसाइड कराना, उन सबको कन्विंस करना कि आप भी इंडिया का पार्ट हैं, आप इसमें मर्ज होंगे. कुछ चाहते थे कि हम मर्ज हों, कुछ चाहते थे हम पाकिस्तान के साथ जाएं, एंड सम वांटेड कि वो इंडिपेंडेंट रहे. तो सबको कन्विंस करना भी एक डिफिकल्ट टास्क था. सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. एंड ये सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. बिल्कुल ठीक बात है, जिनके ऊपर ड्यूटी आ गई, those people were definitely worried कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ जस्टिस कर पाएं. बिकॉज इतनी सारे सर्कमस्टांसिस को देखने के बाद और इतने लॉन्ग पीरियड के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिलना था. सो चैलेंज वॉज नॉट एंड स्मॉल, मतलब कोई छोटी बात नहीं थी कि आप एक छोटे से टास्क को कंप्लीट कर जाएंगे. एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द need of the constitution, that constitution expresses the aspirations of the people. तो सबके aspirations को follow करना, fulfill करना very very difficult task for them. But let's see how the path was chosen by the people, by the constituent assembly. So here we can see that the one party was already exist. जहाँ ब्रिटिश रूल में एक आपकी पार्टी एग्जिस्ट करती थी, दैट वॉज कांग्रेस, दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885. ओके, सो कांग्रेस लीडर्स एंड मोतीलाल नेहरू, 8 members of Congress party, and Motilal Nehru was one of them. Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution. कब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया गया है? In 1928. Now you can imagine 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिला है and 28 में the work has already started. So 1928 में the constitution was drafted by the Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. And after this, in 1931, very very important year, the resolution at the Karachi session, means the meeting basically was took place in Karachi, where the Indian Congress dwelt on how India's constitution should look like. यानी जब भी वो इंडिपेंडेंट होते हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये डिसाइड किया गया इन 1931. सो वन ड्राफ्ट was created in 1928 and the second one is 1931. When both the documents were compared, they committed to the same things like दोनों ने same चीज़ों को include किया हुआ था दोनों ही documents ने. One is universal adult franchise, right to freedom, equality, protecting the rights of minorities. So each and everything was the part of both the documents. So these were the some basic values those were accepted by the all the leaders before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. अभी Constitution Assembly का कुछ काम इतना start नहीं हुआ है, but mostly leaders were accepted कि हमें ये सारी qualities and values को अपने Constitution में add करना है. Now the next point is very very important. You can see that अब Indian Constitution का formation हो रहा है, making path of Indian Constitution here. So Constitution को बनाते हुए Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. Means इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करते हुए ऐसा कुछ नहीं था कि सब कुछ सेल्फ मेड होगा. नो, दे ऑल्सो एडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स जो कहाँ से लिए गए, कॉलोनियल लॉज से लिए गए. दैट वॉज द एक्ट 1935. इसको इंक्लूड किया गया. देन विल ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग कि बहुत सारे लीडर्स बहुत सब चीज़ों से इंस्पायर्ड थे एंड बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, जो आपके आसपास होता है आप उससे इंस्पायर्ड होते हैं, आप उससे अफेक्ट होता है आपको, वेदर इट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आप अफेक्ट होंगे. यस, सो मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. दे वर इंस्पायर्ड, इवन they inspired with the practice of parliamentary democracy in Britain also. अब ऐसा नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे को रूल कर रहे हैं तो ब्रिटेन की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वी इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटेन. देन वी इंस्पायर्ड फ्रॉम द USA ऑल्सो रिगार्डिंग बिल ऑफ राइट्स. एंड देन द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. अभी हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, आपकी हिस्ट्री का चैप्टर है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में, आप देखेंगे. इन रशिया इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस to think of shaping a system based on social and economic equality. So all these things were like inspired. Our leaders were inspired by other parts of the country. और हम सब ने हमने इन सबको एक्सेप्ट भी किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा. बट दीज वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग. सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं हुआ बच्चा. ईच एंड एवरी स्टेप, सब जगह पे उनसे क्वेश्चंस हुए कि वेदर दीज थिंग्स आर suited to our country or not. So all these factors were contributed to the making of our constitution. Now the next topic, you can see the Constituent Assembly, and as everybody knows this thing, the drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. So Constituent Assembly means the members who draft the Constitution, who made the Constitution, and those people were elected representatives. Okay, elected थे, वो ऐसे ही नहीं आए थे, उन सबको elect किया गया था. And elections of the Constituent Assembly were held in 1946. 46 में आपके Constituent Assembly के elections हुए and then the assembly was formed. But after some time you will observe कि country was divided into India and Pakistan. So again the assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and the Pakistan also.
And total members of Constituent Assembly, Indian Constitution had 299 members were there. And we have adopted the Constitution on 26 November 1949. We have completed the work. Completed हो गया था, बिल्कुल हमने completion कर दिया था on 26 November 1949. But it came into effect on 26 January 1950. As you all know, we celebrate this day, that is 26 January, as a Republic Day every year. So this was the Constituent Assembly journey also. This is enough for today's class 9. We'll move with the next topic in the next video. Thank you so much.